start with our statement, which is on a reply that the Government of India gave in a starred question yesterday, which related to a very serious internal security and law and order situation. The question was addressed to the Ministry of Home Affairs, and in its reply, part of which has been quoted in some publications today, speaks to the number of infiltrations that have taken place in Jammu Kashmir, the number of people who have tried to infiltrate and the net infiltration. And this is a bipartisan issue. This is an issue which concerns the security of our Indian citizens and of our Indian armed forces who are defending our borders. So when we are highlighting this issue, we are highlighting it with utmost seriousness, and we note with concern the rise in number of people infiltrating our borders over the last 2 years or last 3 years, from 14 onwards. If I look at the data which says number of people who have attempted to infiltrate, and I start from 2012 onwards, government data says in 2012 it was 264, 2013 it was 277, 2014 it was 222, 2015 it was 121, and then 2016 371. So there has been a huge jump from 121 to 371. If you see the net infiltration which has taken place, the numbers from 2013 are, in 2013 net infiltration, that is, as per definition, by some definition it means successful infiltration. 2013 97, 2014 65, 2015 33, 2016 119. So a huge jump in net infiltration. And this shows that the government's own data shows that the efforts to secure our borders is failing. And I said it not only puts our Indian citizens under threat, but also those of our army bases and camps which are near our borders under threat as well. We very well know what has happened in Pathankot. And we note with concern that what seems to be no lessons learned from the Pathankot incident. There was a report made by Lieutenant General Philip Campos, Vice Chief of the Army, submitted in 2016, which inquired into Pathankot, made a lot of recommendations, especially those related to securing our borders. But that report is gathering dust and no action has been taken. It was also mentioned during the recent demand for grants discussion by our whip, Jyotiraditya Scindia. Question is, who is accountable? It is a serious issue, no doubt, but accountability has to be fixed. And we see that the BJP government is in the state. Their BJP and PDP government are there. The Defense Ministry on certain occasions speaks very boldly about itself, as if it only taught the army soldiers how to hold a gun, shoot a gun. The Prime Minister has been talking about terrorism at various local, regional and international forums, making terrorism a pet subject of his.
and talking about it, trying to rally coalition. So despite having its own government in this state, despite having a vociferous defense ministry, there has been certain changes recently, and despite having a prime minister who's made counter-insurgency and terrorism a priority, then who is accountable for the rise in infiltration and net infiltration at our borders? We see that when India's rankings in ease of doing business merely improves by one position, the Prime Minister's office gets seriously concerned and call a series of meetings as to how come in ease of doing business, government of India's ranking has improved by only one position in 1 year. Will the government call a series of meetings to identify? Will the PM himself chair a series of meetings to identify why the number of people who have successfully managed to infiltrate, net infiltration, has jumped from 33 to 119? Why the number of people whose attempts to infiltrate have jumped from 121 to 371? And it brings to our attention that whether the government is serious about border protection. We have a doubt that if even the borders of Gujarat are fully fenced or not. Last month in March, the Supreme Court itself remarked that our Indian borders on the east are not adequately protected. As reported by the media, the Supreme Court's observation on the India-Bangladesh border on the east, when it remarked on the government's affidavit, it described the affidavit as per media reports as vague and ambiguous. We want our borders to be fully secure. We want the government to take serious steps and match rhetoric with action, because the facts show the opposite, that it is all talk. The net infiltration has only increased. Our vulnerability of our army bases and camps and our Indian citizens has only increased. We hope that the same level of importance that the Prime Minister gives to ease of doing business rankings, he will give much more priority and the deserved priority to our border security and the protection of Indian lives. हिंदी में, जिससे कांग्रेस दल बहुत चिंतित है, उस उत्तर में लिखा साफ जाहिर होता है कि पिछले 2 साल में हमारे बॉर्डर्स, हमारे भारत देश की जो सीमाएं हैं, वो उन पे जो केंद्र सरकार और विभिन्न आर्मी और बीएसएफ का जो संरक्षण का जो उनका भूमिका होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक आ रही है। सरकारी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2015 में 121 लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और 2016 में 121 से बढ़ गया 371 तक। सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन या नेट इन्फिल्ट्रेशन जो तकनीकी टर्म है जो भारत सरकार इस्तेमाल करती है, वो कहती है कि जहां पे 2015 में 33 लोगों ने सक्सेस नेट इन्फिल्ट्रेट हुआ, वहीं 2016 में 119। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत के सिविलियंस की जानों को खतरा है, कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, हमारे जो आर्मी के और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, जो कैंप्स है, उन पे भी एक दबाव आता है, उनके भी जो स्थिति है खतरे में है। हमें सब पता है कि पठानकोट में क्या हुआ, लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार
पठानकोट से अभी तक कुछ सीख नहीं पाई, क्योंकि आर्मी के सीनियर वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोस ने मई 2016 में एक रिपोर्ट बनाई, पठानकोट में क्या कमजोरियां थी। उसमें सिफारिश भी थी कि बॉर्डर फेंसिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, पर वो रिपोर्ट आज भी धूल में पड़ी हुई है अफसर ऑफिस में। उस पे किसी प्रकार का एक्शन या परिणाम हम नहीं देख पा रहे हैं। तो स्वाभाविक प्रश्न है कि अकाउंटेबल कौन है, कि अगर आज हमारे भारत देश की सीमा इतनी कमजोर हो चुकी है कि पहले से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स आ चुके हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? राज्य में तो बीजेपी की खुद की सरकार है। रक्षा मंत्री से ऐसे आवाजें हमें, ऐसे वार्ता हमें सुनने को मिले हैं कि शायद उन्हीं ने ही आर्मी के मेजरों को बंदूक चलाना सिखाया है। और प्रधानमंत्री स्वयं काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म को अपना एक व्यक्तिगत मुद्दा बना के न सिर्फ राष्ट्र के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी काउंटर टेररिज्म पर बहुत वो ध्यान देते हैं। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में सिर्फ एक छोटा रैंक का परिवर्तन आता है, एक रैंक से इंप्रूव होता है, तो प्रधानमंत्री और पीएम ऑफिस इतना चिंतित हो जाते हैं कि पूरा केंद्र सरकार के मशीनरी को बुला के मीटिंग करते हैं कि क्यों इतना करने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंक से उसमें परिवर्तन आया। जबकि ये मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे क्या प्रधानमंत्री मीटिंग बुलवाएंगे? इस पे क्या केंद्र सरकार कुछ नया कदम लेंगी? ये हमारा प्रश्न है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के जो हमारे देशवासी हैं वो सुरक्षित रहें, और भारत के जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको हम सुरक्षित एक माहौल हम दे पाए, और सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वो संपूर्ण रूप से वो निभाएं, क्योंकि इसमें राजनीति का सवाल नहीं, इसमें हमारी देश के संरक्षण का सवाल है। हमें तो अब इसमें भी चिंता होने लगी है कि क्या हमारे देश के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम की सीमाएं क्या पूरी तरीके से सुरक्षित है कि नहीं? क्या स्वयं प्रधानमंत्री के गुजरात राज्य के जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, क्या उसमें सब जगह फेंसिंग है कि नहीं? वो शायद उस पर भी हमारी चिंता है। असम में जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने स्वयं उन्होंने, आपके कुछ मीडिया पत्रकारों के द्वारा हमें बयान पढ़ने को मिला है कि केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट आया है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग में, उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन था कि ये बहुत वेग और एम्बिगुअस है। तो हम चाहते हैं कि हमारी देश की सीमा को हम और महत्व दें। जो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि सीमा को हम सुरक्षित बनाएंगे, उन बातों का असली हम परिणाम हम देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट दिखा रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कम हो रहा है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि देश के शांति के वातावरण को देखते हुए, देश के जवानों की जीवन की सुरक्षा को महत्व देते हुए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री इस पे एक होलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाएंगे, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। तो यहीं पे मैं अपना सुओ मोटो स्टेटमेंट खत्म करता हूं। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए हाजिर हूं। नहीं, वो तो बोल रहे कोई और दूसरे मुद्दे पे। ठीक है, तो गुजरात वाला भी तो नहीं। देखिए, हमारे दल के तरफ से औपचारिक रूप से उत्तर दिया जाएगा कि आगे की विभिन्न राज्यों की रणनीति क्या होगी। मीडिया, अखबारों में तो काफ़ी कुछ आता है, आजकल फेक न्यूज़ का भी वातावरण चल रहा है। मैं आशा करूंगा कि आप जो प्रवक्ता हैं, जो औपचारिक प्रवक्ता हैं, जब इस बात पे एक औपचारिक वो संवाद में अनुसार ऑर्गेनाइज करेंगे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस पे आपको जहां तक संभव है वो उन राज्यों के
आने वाले स्थिति में दल की क्या रणनीति रहेगी, क्या हमारे आने वाले दिनों में क्या हमारे काम रहेंगे, वो आपको सही समय पर बता देंगे। Gaurav, this side, this in the finance bill, which will be passed perhaps very shortly in Lok Sabha and made mandatory along with filing of income tax returns. There are major changes even with regard to political funding. For example, a company, earlier the provision was a company could pay up to 7.5% of its net profit as political funding. Now that ceiling has been removed, and along with it, even the provision to declare who you are paying this to. So wouldn't the Congress, because yesterday you all talked about tax terrorism, Dipinder Huda spoke, but Congress made no reference to these major changes. When it comes to Aadhaar and making Aadhaar mandatory for various central government schemes and for services related to PAN card and IT, we note with concern that how Aadhaar, instead of being an inclusive tool, is only excluding people from getting their right services and being able to share their financial data or their tax related data. We in the parliament will be also raising this through a separate motion. The Aadhaar tool, as you all know, was introduced by the UPA government. It was meant to be rolled out in a phased wise manner, but it seems that the government is being hasty, and as they say, haste makes bad curry. This hastiness is affecting children who are not getting the midday meal. This will affect the lives of honest taxpayers who want to share, who are fulfilling the duty of sharing the tax information. And it also seems contrary to what the Supreme Court has said, which is in central government schemes, Aadhaar is not mandatory. We hope that this government will take into account the concerns of the poor, the honest and the middle class. That a legislation should be passed and BJP will get its majority in the upper house of the parliament by 2018. So what is Congress party's view on that? Well, the Congress party notes that Subramaniam Swamiji is a senior BJP leader, but we wait for the verdict of the Supreme Court. Sir, गुलाम नबी आजाद ने आज राज्यसभा में कहा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके तहत ज्यादातर चुनाव देश में होते हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। क्या 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस ये मानती है कि सच में उसको उस पर विचार करने की जरूरत है जिसके तहत अब तक आजादी के बाद सारे चुनाव हुए हैं? देखिए, चुनाव को लेके बहुत लोगों का प्रश्न आया है, इलेक्टोरल फंडिंग के साथ हो या लोकसभा विधानसभा निर्वाचन साथ होने चाहिए, या आज आपने सुना है कि एक प्रश्न फर्स्ट पास द पोस्ट में आया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर विभिन्न प्रकार के मुद्दे आके भारत के वर्तमान के चुनाव की प्रक्रिया पे प्रश्न उठ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हमें किसी एक राजनीतिक रूप देखना चाहिए जो देश के लिए अच्छा है, जिससे कि चुनाव और फेयर हो, जिससे कि चुनाव और ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि लोगों का जो असली मतदान है, लोगों का जो मंशा है, वो ही प्रकट हो। तो मुझे नहीं लगता कि आत्म मंथन में कोई दिक्कत है।
Well, the report is with Times now. We have not seen the report. It is hard to comment on a question right now which is essentially on hearsay. Various there has been a lot of introspection on this issue. So we want to see that because this is such a sensitive issue, we don't get distracted by reports which get selectively released to certain media channels.